our nation's history. The day we gained freedom from the colonial rule and became the masters of our own destiny. As we stand here today, we remember the sacrifices of our brave freedom fighters who fought tirelessly for our independence. We honor their memory and recommit ourselves to uphold the values of liberty, equality, and justice. We celebrate the spirit of unity and diversity that defines our great nation. From the snow-capped mountains to the sun-kissed beaches, from the bustling cities to the quiet villages, we are one people united in our pursuit of happiness and progress. Let us pay tribute to the architect of our nation who envisioned an India that is sovereign, secular, and democratic. Let us also acknowledge the unsung heroes who have contributed to our nation's growth and development. As we move forward, let us strive to build an India that is inclusive, prosperous, and just for all. An India where every citizen has access to education, healthcare, and opportunities to succeed. So, let us celebrate this Independence We Day. come before you today with grateful hearts, thanking you for the gift of freedom and independence. We remember the sacrifices of our forefathers who fought for our nation's liberty and the brave men and women who continue to defend it. May our freedom be a blessing to all, especially the marginalized, the oppressed, and those who suffer. May we use our liberty to build a society that is just, equitable, and peaceful. We pray for our leaders, especially for our CSA community, our correspondent, Reverend Sister John Paul, and our principal, Reverend Sister Sirisha Rani, that they may be guided by wisdom, compassion, and integrity. May they work tirelessly for the common good and uphold the dignity of every human person. Lord, we ask your blessing upon our nation. May we always cherish and protect our freedom, and may it be a beacon of hope and inspiration to the world. We make this prayer through Christ our Lord, who is the true source of our freedom and the Prince of Peace. Amen. नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल It's a day that commemorates the ethos of unity, discipline and hard work. It is a day that celebrates the spirit of teamwork and cooperation. And what better
celebrate this spirit than to commence our day with the electrifying march past. Dear children, with the huge claps, we encourage our students who are doing the march first, showing the leadership skills, the stepping forward, to receive the honors from the chief guest, from our principal. As they move on, they remember the sacrifices, the efforts, the failures, and the successes of our freedom fighters. As it is rightly said, today's children are tomorrow's citizens. మార్చింగ్ అనేది వ్యవస్థీకృత ఏకరీతి స్థిరమైన నడకను రిథమిక్ టైంలో సూచిస్తుంది. సాధారణంగా ఇది సైనిక దళాలు మరియు ఫీల్డ్ ఆర్డర్ల కింద ఉన్న యూనిట్ల కాలినడక కదలికలను సూచిస్తుంది. मार्च पास्ट को कवात कहते हैं. कवात एक औपचारिक या औपचारिक मार्चिंग है जिसे अवसर महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान सशस्त्र बलों, छात्रों या खेलों टीमों द्वारा किया जाता है. इसके उद्देश्य अनुशासन, एकता और समवंश के प्रदर्शन करना है. Is more than just about steps and formation. In fact, it's a beautiful portrayal of discipline, unity, harmony, and grit. And every step taken is a testament of sheer determination and dedication of each team. So let's embrace this spectacle with a grand cheer. And now, the moment we all have been waiting for. We are thrilled to welcome the team of Golden Finch, leading by the captain Harshad. Golden Finch reflects the qualities that make a symbol of excellence and inspiration. Golden Finch is a symbol of pride. Vibrant yellow and plumage are not just a visual delight, but also embodiment of a guilty and grace and power. కవాతు అనేది విద్యార్థి జీవితంలో జరిగే ఒక ముఖ్యమైన ప్రక్రియ. ఇది విద్యార్థిలో క్రమశిక్షణ, సమయపాలన, మంచి నడవడిక పెంచేలా దోహదపడుతుంది. ఇది విద్యార్థి భవితపై ప్రభావం చూపుతుంది. దేశానికి కాబోయే భావి భారత పౌరులుగా సరైన మార్గంలో నడిపించడానికి కావలసిన పునాది పాఠశాల స్థాయి. मार्च नाम मूलता लैटिन शब्द मार्टियस युद्ध के रोमन देवता मार्स के नाम पर लिया गया है. मार्च पास्ट एक प्रकार की सैन्य परेड है जहां सैनिक या छात्र एक विशिष्ट शैली में मार्च करते थे. इसमें वे एक संगठित और अनुशासन में चलते थे जो उनकी एकता और संगठन को दर्शाती है. Now we are extremely glad to welcome the second team, Indian Rollers, led by the captain Kishore. Color blue represents the sea, symbolizes wisdom, truth, loyalty, and strength. ఈ కవాతు విద్యార్థిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తుంది, వినయశీలతను కలిగిస్తుంది. నిరంతరం శ్రమ, నిజాయితీతో కూడిన పని అనేవి బాల్యం నుంచి నేర్చుకునే అంశాలపై ఆధారపడుతుంది. చక్కని వాక్చాతుర్యంతో ఎదుటి వారిని నొప్పించకుండా దేశాభివృద్ధికి చైతన్యవంతమైన మార్పు సాధిస్తారు. भारतीय रोलर एयर बात रेड हॉक्स लाल पूंछ वाला बाज. यह एक शिकारी पक्षी है. यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बोलचाल का भाषा चिकन हॉक के रूप जान जाता है. साहस,
धैर्य और तेज इसके विशेष गुण है। उसकी ताकत, सहजता और उड़ान के ऊंचाई के वहर से हमेशा से पक्षियों का राजा माना जाता है। We are thrilled to welcome the team of Red Hawks, led by their captain Nandana Harini. The Red Hawks show the integrity and dedication to each other. Red Hawks is a powerful symbol of strength and grace. సమిష్టి కృషి వల్ల ఎంతటి పని అయినా తేలికగా పూర్తి చేయగలరని, సమైక్యతే దేశబలం అనే ఐకమత్యం పెంపొందిస్తుంది ఈ కవాతు. సమాజం కోసం అవసరమైన ప్రేమ, సహనం, స్నేహం అనే లక్షణాలు విద్యార్థిలో పెంపొందుతాయి. पक्षी वृद्धमान और व्यक्तित्व के भरपूर होते हैं। इस पक्षी को बोलने और मानव भाषा की नकल करने की क्षमता होती है। हर तोते प्रकृति से जुड़वा विकास, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हो सकता है। इसको एक मजबूत होता है, सुंदरता, उत्तमता और मिलनसार स्वभाव के प्रसिद्ध है। Now at your side, gracious march of a team named Green Parrots, led by the captain Vishal. The team Green Parrots shows the positivity, refreshment. It represents growth, learning, and harmony. లక్ష్యాన్ని చిన్న వయసులోనే ఎంచుకుని చిన్న వయసు నుండి పట్టుదలతో కష్టపడే తత్వాన్ని వృద్ధి చేస్తుంది. పరిశీలనా శక్తితో శారీరక శక్తులను పెంచుకుంటూ ముందుకు సాగుతూ మానసిక స్థైర్యంతో జీవితంలో ఎదుగుతూ సమాజంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరాలనే మీ సంకల్పానికి విజయోస్తు. చదువుతో పాటు ఉన్నత విలువల్ని పెంపొందిస్తూ పాఠశాల స్థాయిలో సదా మీకు తోడుంటుంది మీ పాఠశాల. Why don't we encourage with a good round of applause as the display the karate skills that are being taught in our school. Let's encourage them with a good round of applause. Brothers and sisters, staff members, dear parents, and you, my dear loving children. Good morning to all of you, and I wish you a very happy Independence Day. दुनिया को तब गिनती आई
देता न दशमलव भारत तो यूं ज्ञान पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। है प्रीत जहाँ की सदा, है प्रीत जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की सदा। आगे भी कहो ना भारत की बात। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे आजाद भारत के कर्णधारों को। मुगल साम्राज्य के लिए महाकाल बन गए एक मराठा सरदार। मां तुलजा भवानी का पुत्र, मराठों की शान, मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करके बचाए थे अपनों के प्राण। ऐसे वीर धरती पुत्र मराठा गौरव थे दक्षिण के शेर, वीर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। जय तुलजा भवानी, जय शिवाजी। फिर आया अंग्रेजी साम्राज्य काल, परंतु अंग्रेजों के साम्राज्य को भारी शिकस्त दे गई ये वीरांगना। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। भाग तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। सकल नगरी भाग को देखो, मुझ पर भारी भार को देखो। शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। अंग्रेजों के अत्याचार देख कुछ नौजवान उठ खड़े हुए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो बस जनाजे निकलते हैं। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को अपनाने, तेरे लाल चले हैं माए, अब तेरी नाच बजाने। निकले हैं बारात सजाने, गुलाम का डोला। रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे। बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे। बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे। बसंती चोला माए रंग दे। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। ये देख देश के नौजवानों में और जोश जाग उठा। तभी देश की आजादी के लिए एक नौजवान जिसे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तन मन धन से बढ़कर जन गण मन। ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए तिरंगे पे जो जियाले यहाँ रहते हैं। तेरी माटी तिलक है मेरा, ऐ माँ तुझे नमन। तेरी ममता में हम मर मिटेंगे वतन।
सौगात दे गए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। वो अहिंसा के पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाले, इंसानियत का पाठ पढ़ा गए हमें वो बापू लाठी वाले। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। हमारे राष्ट्रपिता हमारे बापू गांधी जी जाते जाते स्वतंत्र हिंदुस्तान को हमारे हाथों में सौंप गए और अपने हृदय के ये भाव हमें कह गए,